साहब से कहूंगा कि माइनॉरिटी वेलफेयर भी आपके हाथ में है सर। ये वक्फ बोर्ड का एक ऑफिसर है जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में 22 साल से है सर। 22 years सर, 22 years सर ही इज इनटू माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। अब बड़े बड़े लोग पूरा पुश कर रहे हैं कि ये 22 years से जो माइनॉरिटी ऑफिसर है, ही इज इंचार्ज ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, ही इज इंचार्ज ऑफ हज, ही इज इंचार्ज ऑफ वक्फ बोर्ड, उसको इंचार्ज एडिशनल दे दिए सर। 22 साल से है। ऑफिसर्स ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट जाते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता ऑफिसर का, इट इज नॉट राइट, बट 22 years sir, he is going to be now he wants to become a CEO now. He wants to become a CEO, sir. Sir, you would be surprised, sir. There is one work property at Abbots by the name Moin Manzil, Honorable Speaker, sir. Through you, I would like to bring to the notice of the Honorable CM साहब. CM साहब, आपको सुन के हैरत होगी कि Abbots पे एक मोइन मंजिल एक वक्फ प्रॉपर्टी है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने कोर्ट से स्टे लिया। वक्फ बोर्ड in collusion with the people who want to take that property, which was registered वक्फ property, which I went to the court and I cancelled the registration. तो इसके स्टे मिला, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई। वक्फ बोर्ड and that owner, they make me a party and they went to the court, sir. I was in London, I got information. मुझे पार्टी बनाए। वो अच्छा हुआ कि मैं अपने वकील को बोल के वहां गया। The Chief Justice gave left and right to the Waqf Board Council, sir. Left and right. कि how do you bring the Akbar Owaisi's name in this? How can you ask about Akbar Owaisi? No, and he dismissed the petition, sir. सर, इस तरीके से पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह बर्बाद हो रहे हैं सर। वक्फ के प्रॉपर्टीज they have lost the case, sir. Viceroy Hotel House Committee, sir, in spite of having all the documents which prove that the Viceroy Hotel is a property owned by Waqf, the Waqf Board had lost the case, sir. Ali Sada Ashur Khane ka gaya, Mamit Palli, sir, there's a line of cases, sir. Sir, through you, I request the Honorable Chief Minister, Saab, sir, I had been demanding that a CBCID inquiry should be ordered, and the BRS government had ordered a CBCID inquiry on Waqf properties, on Waqf board, sir. I request you to please call the CBCID department people and ask them till where have they reached, what is the findings, who are the people, kaun hai wo log jo Waqf ki jaidaad ko tabah kare, beche, un sare logon ko hatkadi dal ke jail mein bhijana साहब। साहब अब तक सीबीसीआईडी की रिपोर्ट इंक्वायरी क्या हुई साहब? मुतवल्ली बना दे रहे, ये जिसको देखो ओट आता बोल के दे रहे। लेफ्ट एंड राइट सर, वी आर लूजिंग केसेस। सर, you please find out, sir, the ministry comes under you, sir, Honorable CM, sir. Please call and ask them how many cases the Waqf Board has lost in 1 year, sir. They have lost all major cases, sir. Guttala Begumpet, they have lost it, sir. Waqf Board, they are just losing left and right, sir. Sir, you need to constitute the Waqf Board, sir. I am telling you, sir, if the Waqf properties are protected, sir, you need not give anything to Muslims, sir. The Waqf Board can take care of the Muslims. Their poverty can be finished, sir. Education ka, employment ka, har ek cheez ka jawab Waqf Board mein hai, sir. Please, sir, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वक्फ बोर्ड का देखिए, तबाही और बर्बादी हो रही है। जेल में डालिए साहब इन लोगों को जो अल्लाह की अमानत, अल्लाह की जमीन को बेचे। सर, फ्रॉम लास्ट 25 years, sir, I am fighting, screaming, shouting for protection of Waqf land, sir. Sir, through you, I kindly, humbly, I plead and I request that please protect the Waqf properties, sir. Please protect. ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, sir. This is the property of Allah, sir. Almighty Allah, sir. When they were agitating for Telangana, sir, with me, the BRS went to the court stating that Hussain Shah Wali Dargah land 1,600 acres is a Waqf land. They were party with me. The TRS, KCR Saab was there. Sir, we got an order in our favor stating that that land is there. This TRS government, which claims to be the champions of minorities, yehi government Supreme Court may gave an affidavit stating that this long land doesn't belong to Waqf Board, sir. I went to the Supreme Court also, we fought and we lost the case, sir. Sir, I request, sir, please protect the Waqf properties, sir.
سر وقف پراپرٹیز پہ اگر کوئی بلڈنگز آ گئے ہیں تو میں وہ بلڈنگز کو خالی کراؤں نہیں بولوں گا آپ کو. آپ وہ زمین کسی کو الاٹ کر رہے ہیں تو لے لو نہیں بولوں گا. کرایہ دار بنا دیجئے صاحب, کچھ تو پیسہ وقف بورڈ کو آنے دیجئے, کچھ تو آنے دیجئے. پوری وقف تباہ ہو رہی ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا بار بار کہ ایک مرتبہ دیکھیے, بس ایک دن آرڈر نکل گیا, سرکار کا حکم ہو گیا تھا کے سی آر صاحب کا, ریکارڈز کو لاک ڈال دو, لاک بند. Sir, nobody was also allowed to go and open the lock, see the records, fight the case. پھر میں جا کے لاک کو تھوڑا کھولا جا کر, بولا کچھ نہیں. یہ حال تھا سر. بے شک صاحب دوست تھے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس ایسا ہنر ہے کہ ہم دوستوں سے بھی کام لے سکتے ہیں, دشمنوں سے بھی کام لے سکتے ہیں. ہم نے اس دوست سے کام لیا ہے, انشاءاللہ اس دوست سے بھی ہم کام لیں گے اور کام کروائیں گے. ہم ضرور کروائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایسے ہی دوستی کی اور کچھ نہیں. ہم نے دوستی میں صرف گنوایا نہیں, دوستی میں ہم نے کمایا بھی بہت ہے. ہم نے دوستی کے ذریعے مسلمانوں کے لیے حاصل بھی کیا ہے, پرانے شہر کی ترقی کے لیے بھی کیا ہے. ہاں بے شک بہت ساری چیزیں ہیں جو ہونا باقی ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سارے کام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے. اگر آج دیکھیں گے تو ہماری جد و جہد کا نتیجہ ہے. سر, I remember, sir, the first time when I entered this house, the minority budget was only 5 crores, sir. So I was just surprised. Then to my surprise and to my happiness, it was made 29 crores. I was very happy, sir. But sir, چاہے راجشیکھر ریڈی سے دوستی ہو, ہم نے کھل کے دوستی کی. روشیا سے ہو تو کھل کے دوستی کی. کے سی آر سے ہو تو کھل کے دوستی کی. اب آپ سے دوستی کر رہے ہیں تو آپ سے بھی دوستی کھل کے کریں گے. مگر ایک بات ہے کہ اگر آج 3000 کروڑ کا بجٹ اگر مسلمان اقلیتوں کا اگر اس ریاست میں ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین اور اکبر الدین اویسی کی محنت, جدوجہد, کوشش, لڑائی اور بے باکی کا نتیجہ ہے کہ 3000 ہوا. اگر مجلس نہ ہوتی تو شاید آج کچھ نہ ملتا. ریزرویشن بھی ملا. I know that کہ مجلس کی کامیابی ہے. Congress was in power in Rajasthan, Assam. There they never gave a reservation, but here they were forced to give the reservation because the presence of MIM. That is why I say the need is that the presence of MIM is must for the welfare of the community and the justice for the Muslims. اور میں یہ بھی بات کہوں گا کہ ان کے دور میں بھی مساجد شہید ہوئے اور آج بھی مساجد شہید ہو رہے ہیں. شمس آباد میں مسجد شہید ہوئی, دوبارہ معین آباد کے پاس دوبارہ بنانے کے لیے گئے تو روک دیا گیا. سر, میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ آپ معلوم کریے کون ہے. مجھے معلوم, میں نام لینا نہیں چاہ رہا, وقت پہ نام لوں گا. ان سارے لینڈ گرابرز کا, لینڈ کا دھندا کرنے والے وہ دھندے بازوں کا جو مسجد کی شہادت کے لیے ذمہ دار ہے, چند پیسوں کے لیے اللہ کے گھر کی شہادت کرے, سر ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے. آپ وی شوڈ ناٹ ٹالریٹ. سر, یہاں جو گنگا جمنی تہذیب ہے, ہندو ہے, مسلمان سب محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے, سب مل کر ساتھ چلتے ہیں. ہم اس محبت کو اور مضبوط کرنا ہوگا, اس کو اور پروان چڑھانا ہوگا. سر, لا اینڈ آرڈر کا حساب لاسٹ میں کنکلوڈ کروں گا. اب آپ بول رہے ہیں دوست, رائٹ سر, یہ اچھے دوست نہیں تھے, آپ اچھے دوست تھے بولے. میں ایک مثال دیتا ہوں میرے دوست کی دوستی کا. سر, امت شاہ صاحب آئے تھے, الیکشن کیمپیننگ, چھوٹے بچوں کو اٹھائے تھے, کیس بک ہوا تھا. آئی تھنک آل یو مائٹ ہیو آلسو ریڈ ان the newspapers. سر, اس وقت ایک کیس میرے پہ بھی ہوا, مجھ پر. سر, 10 o'clock is the deadline. 9:50 a police officer, he just pushes the crowd. 9:50 sir, he walks on the stage, he comes and he tries to stop me. I told, ابھی وقت ہے, گھڑی ہے میرے ہاتھ میں, 10 بجے تک ٹائم ہے, اس سے پہلے ختم کروں گا. اتنا ہی ہوا سر, اتنا ہی ہوا. چلیے آپ جائیے, I said. That police officer went away. But the then commissioner, he booked a case against me. He booked a case. My meeting is going on. It is 9:50. He comes and he's obstructing, he's disturbing, and he books a case against me.
And then an inquiry was conducted. The then Commissioner of Police, Chandeliya, he called me and he said, Akbar Owaisi Sahab, I know you are right. Our officers were wrong. I am sorry for it and I am going to make sure the case is withdrawn. Sir, he moves out. He calls the Commissioner of Police who is there today, and the Commissioner of Police says, no, I am not going to withdraw that case. The case will go. I am filing the charge sheet. मैं मुसलमान हूं बोल के मेरे ऊपर केस, और वो अमित शाह है, आपके दोस्त या बड़े भाई है बोल के, उसलिए उनका केस वापस ले लिए. वाह, क्या है साहब, क्या है. अरे हमारी किस्मत तो ऐसी है, ना इस दोस्त ने हमारी दोस्ती के साथ वफा की, ना इस दोस्त ने वफा की है. हम तो नहीं सर. तो वो कैसा हाथ निकाले सर? Police no sir, you're wrong sir. My learned friend, you're wrong sir. You're wrong sir. Police conducted an inquiry and gave a report stating that we can withdraw the case, and they submitted the court, and after the inquiry of the police, the case has been withdrawn from Amit Shah. Because he's Amit Shah. बड़े भाई के भाई. अब गरीब दोस्त है आपका ये, इसलिए केस चल रहा है. खैर सर, आई एम नॉट वरीड सर. अकबर ओवैसी डरने वालों में से नहीं है. पुलिस चाहे कितना भी जुल्म कर ले, ज्यादती कर ले, केस बुक कर ले, अकबर ओवैसी सीना पेश करेगा, पीठ नहीं बताएगा. लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? रेप हो रहा है, गांजा आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है, ड्रग आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है. पुराने शहर में चाकू निकल रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं. लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है बताइए आप. लेकिन पुलिस 10:30 को डंडे मार रही है. सर, आई हैव द राइट टू लिव. I have the right to live. I have the freedom in this country. After 11 o'clock, I am standing out of my house and the police is taking out the sticks and beating me. कर्फ्यू के ऐसा हाला कर दिए. पुलिस सर, पुलिस अगर अपने ड्यूटीज करेगी ना सही तरीके से तो कत्ल नहीं होंगे, गांजा नहीं आएगा. मेरे दोस्त हैं, हमारे ऐवान में रुकन है, उनके एरिया में पुलिस रेड करी, 2 मरतबा कुछ भी नहीं घटा. तो उसके बाद में कमिश्नर पुलिस केम ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि probably we have informers in our department who are informing and everything is clear, that's why we are not getting anything. ये पुलिस है सर. पुराने शहर में 11 बजे के बाद मार रहे हैं. क्या जुल्म है साहब ये. मैं घर के बाहर नहीं खड़े रह सकता. गरीब का घर, गरीब की झोपड़ी छोटी होती है, सोना मुश्किल है, गर्मियों में बर्दाश्त नहीं करके वो घर के बाहर निकल रहा है, तो बाहर कैसा निकला बोल के मार रहे हैं. क्या जुल्म है साहब ये. क्या इसलिए कांग्रेस को लाए कि मैं घर से निकलूं तो मारा जाएगा, मैं घर के चबूतरे पे बैठे तो मारा जाएगा. चाकुआं कत्ल बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है. काइंडली टेक केयर ऑफ दिस लॉ एंड ऑर्डर सर. और अच्छे ऑफिसर्स को ला लिए, अच्छे ऑफिसर्स को लाइए. करप्ट ऑफिसर्स नहीं होना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना, गांजा बंद होना, व्हाइटनर बंद होना है, ड्रग्स बंद होना है. नशे की लत में आज पूरा शहर डूबा हुआ है. आई वेलकम द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इन पर्टिकुलरली बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बाय फॉर कर्विंग द menace ऑफ दिस गांजा ड्रग सर. वी विल lend our full support sir. But let me tell you sir, कोई गांजा बगैर पुलिस की मर्जी से नहीं आता सर. सब मालूम उनको सर, सब मालूम. लेकिन आंख बंद करते हैं अपने जेबों को भरने के लिए. इसलिए मैं कहूंगा कि आज वक्त की जरूरत है कि हमको और आपको फिरका परस्त ताकतों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए. हमको देखना है कि असेंबली के नतायज क्या थे और उसके क्या थे. और चीफ मिनिस्टर साहब आप मौजूद नहीं थे, तो मैं एक बात कहा था कि बजट के स्पीच में आपके डावोस को आप गए थे, 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए. बजट स्पीच में आना था ना साहब कि शॉर्ट उसमें इतना बड़ा अचीवमेंट. तो काइंडली सर इस पर देखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना रियासत तरक्की करेगा, खुशहाली के तरफ जाएगा, और यहां का जो पर कैपिटा आज है ये और आगे बढ़ेगा, और मुसलमानों को उनका हक दिया जाएगा. उस्मानिया हॉस्पिटल बनेगा, और मुझे उम्मीद है कि पुराने शहर में
ट्रेन छुक छुक आएगी मेट्रो। और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जयपाल रेड्डी साहब को हम नहीं भूल सकते, जिनकी वजह से मेट्रो आई। हम राजशेखर रेड्डी साहब को नहीं भूल सकते, लेकिन उसके साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी कोशिश किया था मेट्रो को, उसको भी ना भूलिए। और अगर नहीं भूले हैं तो पुराने शहर में भी चलाइए साहब, मेट्रो आएगी यकीन है। और वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ्फुज होगा, पुराने शहर में पुलिस का जुल्म कम होगा, और खुशहाली व तरक्की के लिए हमारा पूरा ताउन आपके साथ है और हम ताउन करेंगे। हम ऐसे दोस्त नहीं जो दोस्त बनकर पीठ में खंजर भोंकते हैं, हम ऐसे दोस्त हैं जो अपने दोस्त पे खंजर आएगा तो अपने सीने को पेश करने वालों में से है। हम वैसी दोस्ती निभाने वालों में से हैं, वैसी दोस्ती निभाएंगे। उम्मीद करेंगे कि मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा और हक मिलेगा, और जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी, और मसाजिद शहीद नहीं होंगी, फिरका परस्त ताकतें कमजोर होगी। और स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो मुझे वक्त दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया।